How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session of articles, that is we are going to start our part 2, because in our previous session we have understood about articles only, but we have learned only article n. हमने सिर्फ आर्टिकल n के बारे में पढ़ा था, but basically we have 3 articles, right? That is a and the. So we have understood about n in our previous session, right? Apart from this, what other things which we have learned? We have learned about the types of article. That is, we have 2 kinds of articles, that is definite and indefinite article, right? Article दो तरह के रहते हैं, definite article and indefinite articles, 2 types of. So indefinite articles are में a और n आते हैं, indefinite articles में a और n आते हैं, right? Because they do not refer to any particular, क्योंकि वो किसी particular person या thing को refer नहीं करते, particularly specific किसी को नहीं represent करते हैं, वो in common में बात करता है, right? And definite article means उसमें the आता है, so that means कि वो किसी specific person को indicate करके बोलता है, because it points out some specific person or a thing. That's why it is known as definite article. Okay, so we have started with n, right? Now in that we have understood some of the rules related to that. So n is used with common nouns. ये हमें पता है कि n और a दोनों common nouns के साथ ही यूज होते हैं. But what is the difference between a और n? तो हम दोनों common nouns के साथ यूज होंगे, तो दोनों में difference क्या है? So the difference lies in the its form only, कि उसका difference है कि n तभी यूज होगा when it is used before a vowel sound, कि noun जो है वो vowel होगा, उसका sound vowel sound होगा, that is a e i o u में से होगा तो n आएगा उसका sound. अगर apart from that कोई और sound है then it will come a. You need to see the sound, not the letter. आपको sound देखने हैं, letter नहीं देखने. So this was all about n. Now let us start with a. Okay, so a is used with common nouns. A is used with common nouns in singular form. Right? A is used with common nouns in singular form. And the other thing that is used before the n we were using before vowel sound. Then this we are going to use before consonant sounds. Consonant sounds, that is B, C, D. Apart from A, E, I, O, U के अलावा जो भी sounds होंगे वो sounds यहाँ पे आएंगे, ठीक है? Consonant sounds में means other than vowel sounds. Okay? So for example, we can say like a book, because b sound is there, book. So we have written a book. A student, when you are having only a singular word, if it is book, then a will not use. जब आप लोग सिंगुलर एक पर्सन या थिंग की बात करते हो तभी आर्टिकल का यूज होगा. अगर आप प्लूरल फॉर्म में चले जाते हो देन आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड. ओके, हियर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड a. A student,
a book, because student, s sound is there, and s is not a vowel sound, it is a consonant sound. A teacher, a teacher. So again it is a consonant sound, t. Right? Now let us understand that we have seen a single word. Now let us understand that how to use this a in the sentence. Okay, so how to use this a in the sentence? For example, I am writing a sentence over here. I saw a movie last night. I saw a movie last night. Right? यानी कि मैंने कल रात मूवी देखी. A मूवी, एक ही मूवी देखी है मैंने. Right? So a and ma is movie. Ma is a consonant sound. So that's why we have used a. Then they have a red car. They have a red car. Means they are having a red car. Means उसके पास सिर्फ एक ही कार है. Singular हो गया, common हो गया, common noun. Now car is a common noun, right? Now r is a consonant sound. It is not a vowel sound. So that's why we have used a. They have a red car. Okay? Now Reed is a student. Reed is a student. यानी कि Reed जो है वो एक student है. Right? We are talking about only a single person, that is Reed. So that's why we have used a, and it is a consonant sound. Student, s sound. Right? It is a consonant sound. Okay? Now, before letter O pronounced as wo. Sometimes जो letter O है, यानी कि कई बार जो letter O है, O letter है, वो कई बार when sometimes it is pronounced as wo. Sometimes this O letter is pronounced as wo. For example, I have a 1 rupee coin. So over here, O is a vowel letter, right? O जो है वो vowel letter है, पर यानी लेकिन यहाँ पे जो O है उसका pronunciation व से शुरू होता है, one, वो. Right? So it is not considered as a vowel, but it is considered as a consonant sound. Though it is a vowel letter, but the sound is a consonant sound. That's why we have used a over here. I found one-eyed frog. One-eyed frog. So again, vo sound. So here we have not seen the letter, but we have seen the sound of the letter, so A will come and not N. Okay? As I told you just now. Now, I hope that you have understood about the article A very well. Now, let's start with our next article, that is the. Okay, so now let's start with article the. So, first of all, let us know some of the rules of the article the. Now, article the, we know that it is a definite article, right? Now, this article the is used before singular as well as plural nouns. Used before singular as well as plural nouns. Used before singular as well as plural nouns.
वो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज होता है. देन फॉर एग्जांपल the books, the students, right? Now another rule is that we use a or n, we came across or mentioned something for the first time. When we mention something for the first time, जब हम कोई सिंगुलर थिंग पहली बार देखते हैं या पहली बार उसकी बात करते हैं, एट दैट टाइम a और n we will use for the first time, और उसके आगे वही चीज रिपीट होती है तो at that time we will not use a और n, तब हम a और n का यूज नहीं करेंगे. then we are going to use the. okay, we use the when the same noun is used again. We use the when the same noun is used again. We use the when the same noun is used again, right? So once there was a king, for example, कि यानी कि हम द का इस्तेमाल तब करेंगे जब वो नाउन सेम नाउन जो है वो एक बार तो आ गए, तब हमने ए और एन लिखा, अब वही नाउन अगेन रिपीट होता है, then we are going to use the instead of a or n. For example, once there was a king, so here once there was a king, the king was very kind. Now over here, once there was a king, so king is a noun but it is used over here as a singular, so we have used a because the sound is k. Again king दूसरी बार आया, एक बार यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया, अब दूसरी बार अगेन रिपीट हुआ है नाउन किंग. So over here now we will not write a king was very kind, we will not write that. Now अब जब भी कहीं सेंटेंस में king का यूज होगा we are going to use the king was very kind, the king loved to go outside, the king. अब जब जहाँ पे भी हम king देखेंगे तो हम the का यूज करेंगे instead of a, because as I told you the rule, we use the when the same noun is used again. जो same noun जब again use होता है at that time we are going to use the, right? He was carrying an umbrella, the umbrella was broken. Again जब umbrella use हुआ तब हमने n यूज नहीं किया, तब हमने the का यूज किया, right? So when we speak about any particular person or a thing, now ये rules हो गया. Now the another rule is when we speak about particular person or thing, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की
की बात करते हैं, at that time also we are going to use the. There are so many rules that you need to remember while using the. The के बहुत सारे rules थे आपको याद रखने. The girls you mentioned are absent today. कि आप जो girls की बात कर रहे हो, जिसकी बात की है आपने, यहाँ पे हमने कई particular girls की ही बात की है, वो आज absent है, right? जो आपने mention की है जो girls, वो आज absent है. Means the girls you mentioned are absent today. Let me write the example over here. The girls you mentioned are absent today. The girls you mentioned are absent today. कि आप लोगों ने जो गर्ल्स की बात की है वो आज एब्सेंट है. यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक गर्ल्स की बात की गई हुई है. That's why we have used the. And yes, girls here it is a plural form. So whatever we are going to use the, right? So let us revise these rules again and then we'll move ahead. So used before singular as well as plural nouns, singular and plural के साथ we use a or an when we mention something for the first time. a or an का यूज करेंगे जब हम मेंशन करेंगे किसी थिंग को पहली बार. We use the when the same noun is used again. अगर वही noun repeat होता है तो हम the का यूज करेंगे. And when we speak about particular person or a thing, जब किसी particular person or thing की बात करते हैं, at that time also the is used. Now when a singular noun is meant to represent a whole class, means जो एक singular noun है लेकिन वो noun पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट दिस रूल्स देन यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस रूल्स विद एग्जांपल्स इन योर बुक. Okay, so I hope that you have noted down this in your book. Now let us move ahead. When a singular noun is meant to represent a whole class, that means the peacock is the national bird of India. जो peacock है वो singular noun है, but here the peacock is representing the whole class. वो पूरे peacock community को represent यहाँ पे करता है, right? वो पूरे peacock उसके जो peacock का जो है वो उसकी पूरी community को एक peacock represent करता है. So at that time also the is used. Okay, so when a singular noun is meant to represent a whole class, meant to represent a whole class. When a singular noun is meant to represent a whole class. The peacock is the national bird of India. Peacock is the national bird of India. The washing machine is now a necessity. Washing machine जो है वो एक पूरे commonly यूज किया गया है, but here washing machine जो है एक singular नाम है, but वो पूरी जो washing machine का उसका जो है उसको represent करता है, right? So
is we are using over here, we are going to use the washing machine is now a necessity. The washing machine is now a necessity, right? So but here there is one exception. यहाँ पे एक exception है that the is not used with the nouns man and woman. the जो है वो man और woman के लिए यूज नहीं होता है. man and woman वो man और woman के लिए यूज नहीं होता है. when used to denote the whole class, क्योंकि man और woman पे पूरे क्लास को डिनोट करता है. बट ओवर हियर man and woman के साथ the we are not going to use. This is the exceptional case. Okay, so I hope that you have understood this. Okay, so now here I have written some of the rules related to the only. So let us see that rules before the names of newspapers and sacred books. यानी कि न्यूज़पेपर और ऐसी बुक्स हमारी जो सेक्रेड बुक्स है, राइट, द होली बुक्स आर वी कैन से, तो उसके आगे भी द का ही यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द महाभारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, राइट. सो ऐसे जो है वहाँ पे भी द का यूज होगा. देन अनदर वन दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, स्ट्रेट्स, गल्फ, सीज एंड माउंटेन्स, यानी कि ये सभी चीज़ों के आगे भी द का यूज होगा. द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द हिमालयाज, द अरेबियन सी, etc. Then afterward, before the names of things that are only one of its kind, यानी कि जो चीज़ पूरी दुनिया में एक ही है, उसके अलावा ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के आगे भी द का ही यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ is only one, or we don't have many more earths. Then the sun, we have only one sun. एक से ज़्यादा सन नहीं है हमारे लोगों के पास, राइट. सो ऐसी जो वन ऑफ इट्स काइंड जो एक ही चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों के आगे भी द का ही यूज होगा. द स्काई, द मून, राइट. देन आफ्टरवर्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजियंस, मीन्स ऐसे ग्रुप्स और कंट्रीज, ऐसे ग्रुप्स को हम जब डिफाइन करते हैं, यानी कि वो कोई कंट्री या रिलीजन को बिलोंग करते हैं और ऐसा कोई ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, तो हिंदू वो एक पूरा ग्रुप हो गया ना. तो जब हम ऐसे कोई रिलीजन और कंट्री को डिफाइन करते हैं, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, देन एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द अमेरिकन्स, राइट, द रशियंस. सो इन दिस वे, for all these reasons also we are going to use the before it, then now. So if you want to note down this rules, then you may note it down, pause the video and just note down these rules. So after that we will move further. Okay, so I hope that you have noted down these rules. Now let's move ahead and let us see another rules. Okay, so now here are another rules. Okay, so let us see that before the names of architectural structures, means architecture जो हमारे पुराने जो famous buildings है, उसके आगे भी द का यूज होगा. द ताजमहल, द रेड फोर्ट, राइट. देन आफ्टर बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज, यानी कि हमारे जो फैमिलीज के नेम है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ योर सरनेम इज एनी काइंड ऑफ शर्मा, देन द शर्माज, द टाटाज, द अंबानीज, राइट. तो उसके आगे द का यूज होगा. देन आफ्टरवर्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, यानी कि हमारी हिस्ट्री में जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स रह चुकी है, राइट. ऑल दिस काइंड ऑफ इवेंट्स यू विल लर्न इन एसएस. ओके, सो ऐसी जो इवेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल द डांडी मार्च, द सॉल्ट एक्ट, राइट. सो सच काइंड ऑफ इवेंट्स, व्हेन these kind of events are there, before that the is used. Then afterward before adjectives in superlative degree, यानी कि जब adjectives superlative degree में होते हैं, that is in est form. For example the strongest, the coolest, the happiest, the saddest,
So when these are in the superlative form, at that time also the is used before such adjectives. After that, before adjectives used as noun, जब adjectives जो है वो noun की तरह वो sentence में use होते हैं तो उसके आगे भी the use होगा. For example, the poor are not always sad. यानी कि यहाँ पे जो poor है वो adjective है, but poor is over here. जो poor है वो यहाँ पे एक noun की जगह पर है, यानी कि poor people की बात की गई है, right? The poor people are not always sad. So it is adjective, though it is used as a noun over here. That's why we have used the. The honest are appreciated. यानी कि जो honest people है वो appreciate होते हैं. Honest, if we will see a single honest, then it will give no meaning. But here honest is used as a noun. That's why we have used the. The honest are always appreciated, right? So again, if you want to copy down these rules in your book, then just pause the video and copy down these rules. Then we'll move see a further few rules, okay, related to the. Okay, I hope that you have written these rules. Now let's see some of few rules, last few rules related to the. Okay students, so we have seen rules related to the. Now we are going to see some of the things that omission of the article means कि कहाँ पर किस जगह पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा. आर्टिकल्स हम कहाँ पे यूज नहीं करेंगे. ओमिशन मीन्स हम कहाँ पे उसको आर्टिकल का यूज ही नहीं करेंगे. So for that also we have written some of the rules. No article is used before proper noun. कि proper noun जो है उसके आगे यानी कि particular name दिया गया जाएगा, right? Proper noun में तो उसके आगे article का use नहीं होगा. Then afterward, for example, महात्मा गांधी was a freedom fighter. तो महात्मा गांधी वो proper noun हो गया तो उसके आगे हमने एक भी article use नहीं किया है, right? Then after, no article is used before the name of a language. किसी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज का नेम हो तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. शी इज लर्निंग इंग्लिश. सो इंग्लिश जो हो लिखा हमने उसके आगे हमने एक भी आर्टिकल यूज नहीं किया है. सो इन सच केसेस आल्सो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड एंड नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ गेम. किसी गेम के नेम के आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. वी प्ले फुटबॉल इन द स्कूल. सो फुटबॉल इज द नेम ऑफ द गेम तो उसके आगे हमने कोई आर्टिकल ही यूज नहीं किया. सो इन सच केसेस आर्टिकल्स विल नॉट बी यूज्ड. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक आर्टिकल वेरी वेल. नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. I hope that you can solve it out. Okay, and as a part of revision I am going to send you some of the questions in the description section. If you know the answer then you can answer me in the comment section. अगर आपको आंसर्स पता है तो आप लोग मुझे comment section में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है. And still if you have any doubt then just go through the video. आप वीडियो को फिर से देखो और else आप लोग मुझे comment section में भी आपके doubts पूछ सकते हो. You can ask me in the comment section also. So I hope that you have liked this video related to articles and I hope that you enjoyed watching this video. So now we'll see you in the next session. So till then, bye everyone, take good care of yourself and thank you.